Yes, in the last class, we were just looking into the basic of basic information about light, like electromagnetic spectrum and light itself is electromagnetic wave. And you know well that when various kind of light arranged either in increasing or decreasing order of their specific characteristics, then this arrangement itself is called electromagnetic spectrum or a spectrum of light. You see here a brief, let us take a brief look of electromagnetic spectrum. You see here the radiation coming from the sun to us can be roughly and very loosely categorized as gamma radiation, X-ray radiation, ultraviolet, visible light, infrared, and microwave and radio wave. So all these are the brief and loose. Yes, yes. Is there any problem? If you are not getting voice, I can't solve this problem. Now, okay. So now try to understand. In the last class, we have discussed a lot about radiation. Electromagnetic spectrum is very loosely divided into these regions based on the source of that light. Microwave and radio waves are produced by changing electric current. हेलो हाँ एक्चुअली अभी मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए ओके यस microwave and radio wave are produced by changing electric current. On the other hand, infrared light is mostly produced by the thermal radiation of bodies at room temperature, and visible light comes from the thermal radiation, chemical reactions, and numerous technologies like LED, laser, cathode ray tube, gas discharge lamps, etc. Ultraviolet light comes from the same source as visible light, but at a slightly higher frequency. Ultraviolet radiation is at a slightly higher frequency than that a human's eye can see. So ultraviolet radiation is not helpful to human to see the things around. An X-ray can be produced by accelerating electrons very quickly, like in cathode ray vacuum tube. And gamma rays are similar to X-rays, but they are generally distinguished by coming from radioactive decay instead of electrons and accelerations. So these are the brief variation or brief discussion about the components of electromagnetic radiation. Now, few of radiations will have variation in their wavelengths and frequency, and therefore you see hydrogen is the most common element in the universe, making up about 75% of all the normal mass in the universe. It floods the universe with a light at its signature wavelengths of 21 cm. What region of electromagnetic spectrum could this light be in the spectrum of electromagnetic radiation? So let us look over the answer. You see here, as this radiation has a wavelength of 0.21 meter, therefore it must be in the range of microwave. Second one is in human skin. You know well that vitamin D is essential for us, that we receive from solar radiation or sunlight. So in human skin, vitamin D production occurs when precursors molecule react with the light at wavelengths between 270 and 300 nanometer.
So what range of electromagnetic spectrum includes that wavelengths, which causes production of vitamin D on human skin? So let us check out. You see here, ultraviolet is specifically ultra UVB. Ultraviolet blue is specifically responsible for production of vitamin D on human skin, and this ultraviolet radiation is a part of solar radiation. So ultraviolet radiation present in the solar radiation is specifically responsible for production of vitamin D on human skin. Now come to the point, visible light. Visible light is a part of electromagnetic spectrum, and it consists of 7 components starting from red to violet. So there are 7 colors present in this range of spectrum, and we call this 7 component color together as a light, because our eye can see all these 7 components, and beyond this range our eye is not able to see. So what color in visible spectrum has longest wavelengths? You have to answer that while you talk about vibrio. So when you move from violet to red, wavelengths go on increasing and frequency go on decreasing. So in a spectrum of light, each color has longest wavelengths. You see here, violet, V for violet, B for blue, and G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. And here indigo has been left because indigo and violet both have almost approximately same wavelength. That's why it has been ignored here, and that's why we are having right now only 7 colors, only 6 colors, B, B, G, Y, O, R, but there must have been 7 colors because indigo has already been merged in violet range. That's why it has shown only 6 colors. But in actual practice, when you minutely observe the radiations, visible radiations of the light, then there will be 7 colors. Okay, so you see here, violet will have least wavelengths 380 nanometer, and blue will range its wavelengths from 450 to 495 nanometer, and green will range a little bit higher frequency, higher wavelengths, that is from 495 to 570, and yellow will have wavelengths 570 to 590, and orange will have 590 to 620 nanometer, and red will have highest wavelengths, that is from 620 to 750. So in our spectrum of visible light, red will have longest wavelength. So let us look into the answer. Red has the longest wavelengths. And now come to the point. Light slow down in the denser media, as I have already discussed in the previous class, which causes it to refract. Basic cause of refraction of light while passing from one medium to another medium is that speed of light gets changed when it is passing from one medium to another medium. Because of that reason, light gets bent from its actual path or get deviated from its actual path while making a transition from one medium to another medium. Refraction causes a various frequency that make up white light to disperse, because each frequency slow down to a different speed. So different component color of light get deviated through different angle. That's why after passing through the medium, it get dispersed or getting separated from one another and appear as a 7 band of colors and called a spectrum of light. And naturally, this band of color you would observe as a rainbow in the sky during rainy season. So here you see this is a prism, and when white light passes through a prism, after passing through the prism,
several colors get separated from one another because of different speed in the prism, and hence this color of band of colors are called a spectrum of light. And deviation will be different for different component color, because different component color has different frequency, so will deviate through different amount. So we have learned that various light of various frequency when passes through the same medium will deviate through different angles, and this is basic reason, or that light get dispersed from one another, component of light get split up. That is, white light when passes from prism get split up into 7 component colors because of distortion, because of different frequency is there in different component color of the light. That's why get deviated through different angle. Now look at, use the image to decide what color moves the slowest in the glass. You know well that here all the colors are the components of white light. So which color moves slowest in the glass? Those which moves slowest will bend most. So which color bend most after passing through the prism? You see here violet color bent most and red color bent least. It means that red color will travel fastest in the glass and violet color will travel slowest in the glass, and so on. So you see here blue or violet color refract at the most extreme angle. This means that as light passes through the glass, blue or violet slow down most and red slow down least. This is the basic fact, and that's why white light when passes through prism, different color get deviated through different angle and hence get dispersed, and this optical phenomenon is called dispersion. Now some things, color vision that we people are facing, and many of creatures on this earth are not enjoying the scene of colors. It is we people, human being. Our eyes have 2 types of cells that respond to the visible lights, rod cells and cone cells. You know well all that one of the cells are responsible for the intensity of light, and the other one is responsible for color of light. So now rod cell detect visible light with a high sensitivity. So rod cells are responsible for sensitivity of light. If one having less rod cells in their retina or in their eyes will be unable to see in the dim light, because they are lacking the rod cells which are responsible for the sensitivity of intensity of light. Therefore, if one has large number of cells, rod cells in their eyes, even they will be able to read out book in the dim light or even in the almost dark. Now cone cells specializes in detecting the wavelengths of lights, and so color of light is basically categorized with the wavelengths. So cone cells are responsible for sensitivity of color, and different types of cone cells respond to different color ranges. So our eyes have different types of cone cells. So one is responsible for red, and other is responsible for violet and green and blue. So average sensitivity of our eyes to intensity of color is yellow. So our eyes most sensitive to yellow color. That's why in India, yellow color is supposed to be
so auspicious that in worship activities and in marriage activities, these colors are popularly used because our eye is very sensitive to yellow color in context with the law of physics, and even radiation coming from the sun. So visible components of the sun has the highest intensity, that is near about around the yellow colors. And it is because of this reason a school bus has color yellow, because our eye is very sensitive to yellow color and it can see yellow color very comfortably, because average intensity of light, intensity of human eye, average sensitivity of human eye towards the color is almost around the yellow color. Now come to the point. So number of colors that are detectable has varied as life has evolved. So most birds and reptiles have 4 different colors they can detect. Birds and reptiles only can detect the 4 different colors, not 7. So 4 different colors out of 7 can be detectable for the birds and reptiles. On the other hand, mammals have 2 color visions, with the exception of primates that have 3 color vision. You see here, these 3 colors are primary colors: blue, green and red. And with the help of these 3 colors, we can have various other colors. Now, colors we can see come from 3 overlapping regions. You see here, these 3 colors overlap together and generates almost all colors towards which our eyes are very sensitive and able to detect. We can see every color on the rainbow from just 3 different types of cones that we are having in our eyes. So 3 different types of cone cells we are having, and these 3 different types of cone cells are responsible to see the primary color called blue, red and green. And as these 3 types of cone cells can see these three colors, so therefore intermingling of these 3 primary colors, whatever color we obtain will be able to detect, will be detectable by our eyes. What about color not on the rainbow? If multiple cones are activated, our brain actually invent colors to describe the experience, like pink and white. You know that white is not a color. White is basically presence of all colors. And pink is not natural color, but it is a mixture of 2 colors or more than 2 colors. So basic colors are there 3: red, green and blue. And it is our brain that can create lots of color vision by intermingling of different primary colors in different amount or percentage. So let us check this one to detect color vision. You see here, and this is observer who can see color of light. In the last class we have discussed a lot, and this is the source of light which can produce a various color of light ranging from blue to red, violet to red. And this is the filter that can filter out the colors. And here we place a edge, you see, and just on, this is color filter. It can filter out the color. So now let us start with, first of all, we see that which color is most detectable to human eye. Let us start. Here we give switch on the source. Now right now yellow color is not
filtered by this filter. That implies that this filter allow the yellow color to pass through and reach to eye. And after getting into the eye, brain will interpret this color and will give a signal that it is yellow. You see here. Now when you change the color, if you move, yes, because you see that this filter is only capable to allow to pass yellow light from it and will be block all other colors. So when you allow red one will not reach to eye, when you allow, and green will come, and then it will not be allowed. So you see here, it will not allow, not allowed. But when filter is fixed to blue, then it will only allow the blue color to reach and will be blocked, will block other color. When filter is fixed to red, then only it will allow to pass the red and block other colors. Now check out the who is waiting. Yes. Now, if you take on the text with photon, then you see what happens. हाँ, बोलो. Yes. हमारे एनवायरनमेंट में जो सन का लाइट है येलो है, जिसके कारण हमारा वो फिल्टर भी येलो ही होकर आता है. No, और सर this filter is limited to here in our lab. लेकिन ये filter हमने ऐसा क्यों किया है, सोच समझ लीजिए. Because जो हमारा वर्ल्ड कलरफुल दिख रहा है, उसके पीछे ये राज है कि सन्स लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 7 कलर्स. लेकिन जो ऑब्जेक्ट उसमें से कोई एक ही कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट वैसा ही कलर का दिखता है जिस कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है. अब समझ में आ गई बात. जैसे यहाँ क्या है, ये जो फिल्टर है केवल पर्टिकुलर कलर को पास करने देता है, बाकी को रोक लेता है. तो हमारी आई तो केवल उसी कलर को देखेगा जो फिल्टर से पास होके हमारी आंखों तक पहुंच पाता है. अब समझ गए हो. और ये फोटोन के फॉर्म में. सर हाँ, वो रेड, बोलो. तो सर हम लोग व्हाइट येलो रेज इसलिए देख पाते हैं कि वो बॉक्स जो जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, हाँ, वो येलो को छोड़ के बाकी सारा कलर वो एब्जॉर्ब कर लेता है. हाँ, तो वो येलो दिखता है. आप समझ गए हो कि नहीं. जैसे गुलाब के फूल जो पिंक कलर के होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है. गुलाब की फूल का जो पेटल होता है, जो पंखुड़ी होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वैसा ही है कि बाकी कलर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल रेड को वो रिफ्लेक्ट कर देता है. दैट्स व्हाई रोज अपीयर्स पिंक और रेड. अब समझ गए हो कि नहीं. इसलिए आप जितने भी कलर अपने आसपास इस दुनिया में देखते हो, वो सभी कलर जो है वो ऑब्जेक्ट का कलर नहीं है. वो कलर है लाइट जो सन से आ रहा है, व्हाइट लाइट, उसमें से 7 कलर में से कोई एक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वैसा ही कलर का दिखने लगता है. अब समझ गए हो कि नहीं. गॉट इट. जैसे स्पेस से साइंटिस्ट हमारे पृथ्वी को देखता है तो कैसा दिखता है, उसको ब्लू कलर का दिखता है. क्यों? क्योंकि ओशियन वाटर जो है बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लू को रिफ्लेक्ट. अब समझ गए क्यों? तो हम लोग जो स्काई को ब्लू कहते हैं क्योंकि ब्लू कलर ज्यादा डेविएट करता है, इसी कारण स्काई ब्लू रहता है. और व्हाइट येलो डेविएट करता है. इसके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है स्कैटर्ड, ज्यादा करता है. आप याद रखिए कि हम स्पेस में चले जाएंगे तो लाइट रहेगा, व्हाइट लाइट रहेगा, लेकिन स्पेस डार्क दिखता है. बिकॉज लाइट के कंपोनेंट कलर को रिफ्लेक्ट करने के लिए, स्कैटर करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम वहां नहीं है. इसलिए स्पेस डे टाइम में भी डार्क ही दिखता है, जबकि हमारा एटमॉस्फेयर डे टाइम में ब्लू दिखता है. अब समझ गए हो कि नहीं. ओके. और कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम.
हमने ये देखा कि ये फिल्टर जिस जिस कलर को अलाउ करेगा वही कलर हमारी आई देख पाएगा। ठीक यही घटना होती है कि हमारे आसपास कुछ पेड़ के पत्ते ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ अलग कलर के होते हैं, कुछ मल्टी कलर के होते हैं। इसका मतलब है कि वेरियस पोर्शन ऑफ दैट लीव्स रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट कलर, दैट्स व्हाई इट अपीयर्स टू बी कलरफुल। अब देखो, बर्ड्स को सारे कलर दिखाई नहीं पड़ेगा, एलिफेंट्स को भी सारे कलर दिखाई नहीं पड़ता है, और साइंटिस्ट रिसर्च करके देखा कि शार्क को भी कोई सारे कलर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, इट इज वी पीपल, ह्यूमन बीइंग, जो कि हम सारे कलर को देख सकते हैं। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्टिविटीज को आपने समझा, और इस पर मैं एक बार फिर दूसरी एक्टिविटीज पर हम जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, यस, एंड देन वी सी हियर। तो हमारे आई के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन भी होता है। सो ये ध्यान देना है कि व्हाट अबाउट कलर्स नॉट ऑन द रेनबो? If multiple cones are activated, our brains actually invent colors to describe the experience, like pink or white. Information from our eye is processed in our brain to build a guess about what we are seeing. Okay, first of all, a particular radiation enters into the eyes, and then eye interpret and guess, then color, and generate that signals, and then we are able to see that color. So our brain interpretation isn't perfect. So our brain interpretation isn't perfect. We call these mistakes optical illusion. क्योंकि ब्रेन कई बार एक्चुअल सिग्नल कुछ जा रहा है, उसको इंटरप्रेट कुछ करता है, क्योंकि ये दैट कुड बी द टाइम ऑफ कैलकुलेशन एंड एक्शन एक्टिवेशन, तो उसमें भी डिफर करेगा, तो उसकी वजह से भी इल्यूजन क्रिएट होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होगा। कई बार मैजिकल शो में ऑप्टिकल इल्यूजन का यूज किया जाता है, और इवन आपका जो सिनेमा में जो इमेज दिखाई पड़ता है वहां भी ऑप्टिकल इल्यूजन का यूज किया जाता है। एक्चुअली वहां स्टैंडिंग पिक्चर होता है, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है कि पिक्चर मूविंग है। क्यों? फर्क क्या है? क्योंकि हमारे आई का जो लिमिटेशन है वो केवल 1/16 सेकेंड के बीच में ही दो सिग्नल को डिस्टिंग्विश कर सकती है। अगर 1/16 सेकेंड से कम का टाइम इंटरवल हुआ तो वो दो सिग्नल को एक काउंट कर लेगी, और ये कहलाएगा ऑप्टिकल इल्यूजन। इसीलिए जो वीडियो कैमरा है वो करता क्या है कि 1 सेकेंड में 1000 फ्लैश देता है, इसलिए दो फ्लैश के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 1/1000, और ये 1/1000 जो है सेकेंड, ये बहुत ही स्मॉलर हो गया। किससे? जो हमारे आई का परसेप्शन है, हमारे आई का जो परसेप्शन ऑफ विजन जो है वो है 1/16 सेकेंड, यानी एक टॉर्च से एक सिग्नल 1/16 सेकेंड और फिर एक सिग्नल 1/16 सेकेंड के बाद दें तो हमारी आई ये दोनों सिग्नल को अलग अलग डिटेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर ये सिग्नल 1/16 सेकेंड से कम समय के इंटरवल में दें तो हमारी आई दोनों को दो नहीं व्यू करेगी बल्कि एक ही देख पाएगी। ये ऑप्टिकल इल्यूजन कहलाता है। अब जरा देखिए, रियल कलर, these are called प्राइमरी कलर, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, और बाकी जितने भी कलर आप देखोगे तो इसी से बनेगा। जब तीनों कलर को एक साथ मिला देते हो तो क्या मिल जाता है? व्हाइट। इसलिए हम प्राइमरी कलर इसको कहते हैं, बेसिक कलर इसको कहते हैं, क्योंकि ये तीन कलर सिर्फ हमारे पास हो तो बाकी जितने भी कलर है डिजायर्ड अमाउंट में हम तीनों को मिक्सअप करके अलग अलग कलर प्राप्त कर सकते हैं। So, one source of confusion comes from the similar terms of subtractive and additive colors. देखिए, यहाँ पर दो कलर्स को हम लेके चलते हैं, एक subtractive कलर्स है, एक additive कलर्स है। जैसे light sources works by adding colors,
लाइट सोर्स जो कलर्स को इमिट कर रहा है, तो एडिंग मोर कलर्स ऑफ लाइट विल ब्रिंग द कलर वी सी क्लोजर टू व्हाइट। अगर एक से अधिक कलर को हम मिक्सअप कर दें तो वो एक ऐसा कलर देगा जो कि व्हाइट के आसपास हो। इसलिए वी कैन सी दैट व्हाइट कलर इज ए प्रेजेंस ऑफ ऑल कलर्स, एंड दिस इज हाउ कंप्यूटर स्क्रीन प्रोड्यूस अ वाइड गेम आउट ऑफ कलर्स। यही वजह है कि कंप्यूटर स्क्रीन को हम यूज कर सकते हैं, वेरियस कलर वो जेनरेट कर सकता है डिफरेंट अमाउंट में मिक्सअप करेंगे तो। अब जरा देखिए, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट को मिला देते हैं तो देन वी गेट cyan कलर। दिस इज कॉल्ड cyan कलर, ओके, व्हाट यू सी हियर। एंड व्हेन यू मिक्स अप ब्लू, रेड, then you get magenta. This color is called magenta. You see here, this is magenta. And when you mix up red and green, then you get yellow color. So here you see yellow color. Red and green when mix up, you will get red colors. ये yellow color. और आप होली में जो अबीर से खेलते हो उसको भी मिक्सअप करके देखोगे, ग्रीन अबीर और रेड अबीर को मिलाओगे तो येलो दिखेगा। अब आगे देखिए, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, इन तीनों को एक साथ मिला देते हैं तो फिर व्हाइट मिल जाता है। यू सी हियर, इसलिए ये प्राइमरी कलर कहलाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स एंड ऑल अदर कलर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कलर्स। एंड हियर यू सी, फिर देखिए उल्टा काम कर दें तो जैसे हमें मिला मेजेंटा, हमें मिला सियान कलर, हमें मिला येलो कलर, तो अगर मेजेंटा और सियान और येलो ये तीनों को मिला देते हैं तब क्या बन जाएगा? तो फिर हमें व्हाइट मिल जाएगा। मिल जाना चाहिए? नहीं, रेड मिल जाएगा जिससे ये बना था सबसे। ये देखिए, ये हुआ मेजेंटा, ये हुआ येलो, ये हुआ सियान। तो जब सियान और येलो कलर को मिक्सअप करते हैं तो हमें ग्रीन बन जाता है, और जब और सियान और मेजेंटा को मिलाते हैं तो हमें ब्लू मिल जाता है, प्राइमरी कलर मिल जाता है, और जब येलो और मेजेंटा को मिलाते हैं तो रेड मिल जाता है, प्राइमरी कलर मिल जाता है, और जब ये सारे सेकेंडरी कलर मिक्सअप हो जाता है तब ये ब्लैक मिल जाता है। तो आपने क्या देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑल प्राइमरी कलर गिव्स व्हाइट and presence of all secondary color gives black. This is interesting things. And pigment, जो हम देखते हैं कि प्लांट्स के लिप्स में पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट की वजह से उसका कलर ऐसा दिखता है। पेंट्स, जो वेरियस कलर की पेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, डाइज जिससे कपड़े को डाई करते हैं, एंड फिल्टर्स, ऑल वर्क्स बाय सब्ट्रैक्टिंग कलर्स। इसलिए ये क्या कहलाएगा? सब्ट्रैक्टिंग कलर्स। सेकेंडरी कलर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टिंग कलर्स, जैसे सियान, मेजेंटा एंड येलो, दीज आर सब्ट्रैक्टिंग कलर्स। ऑन द अदर हैंड, ग्रीन, रेड एंड ब्लू आर एडिटिंग कलर्स और एडिंग कलर्स, एडिटिव कलर्स एंड सब्ट्रैक्टिव कलर्स। सो टू कलर्स कीप इन माइंड। एंड नाउ when white light shines on blue paints, it looks blue. Why? Because the blue pigment absorbs every colors except blue. Blue is reflected back by the blue paints. That's why when you paint anything, blue appears to be blue, because it absorbs all other colors and reflect back the blue. That's why that object which is painted blue will appear blue. Now adding more pigments will remove more colors and bring the reflecting light closer to the black. If you add up more colors, then it will appear as a black. So absence of light itself is called black, and presence of all lights called white. You see here, magenta dye. This is a color paint. Magenta dye plus yellow dye reflects only red and absorbs all others. Cyan dye and yellow dye reflects only green, and cyan dye, magenta dye reflects only blue,
and cyan, magenta and yellow, all three together gives no light. That is called black. Now let us look over the questions. What three colors of light does a TV need to make every color that human can experience? Of course, your answer would be blue, green, red. Let us check out. So a TV, a screen is focused with the three primary colors, and because of that, presence of all these three colors can give you the sensation of all other colors by mixing up these three colors in different proportion. Most television can only produce red, green and blue lights. So they get the other colors from different ratio of red, green and blue. Alright. And if you are in future going to be an engineer working on the television screen and mobile screen, then you must know about the color, primary, secondary and these three primary colors are responsible to giving you sensation of all colors that you see all around you. What three pigments does a printer need to make every color that human can experience? Similarly, nowadays we are having a printer, color printer. So even then there must be present three pigments there in printer so that it can print out almost all color that human can experience it well. So let us check out. Most printer use a combination of cyan, magenta, yellow and black. It means printer consists of subtractive color and TV screen consists of additive colors. So now take out here red light, green light and blue light. When you mix up one of the two, you see here. And what happens? What happens? You see? Well, and now what happens? Okay. So red and green. And what happens? When all color is absent, then, hello? When all color is absent, then it appears dark or black. And if you, here, whole screen will appear green because only green color is spread over the screen. Now what happens if red is also spread over the same screen? Then color will go on changing. Ultimately, you will have those color. What could be the combination of red and green? You have understood well. Red and green is just equal to yellow. Now, make the red 0 and then combine the blue and red together. Then what color do you obtain? You get green plus blue equal to cyan color. And now, if you make the green red 0 and then combine blue and red, then what color would you get? Yes, you will get here magenta. Okay. So now, and when all three colors red, blue, green are, then what you get? White color. That's the fact. Now, so now come to the point next. Yes, any question? Hello. सर ये तो अगले चैप्टर में था डिस्पर्शन ह्यूमन आई में, अभी लाइट आना पढ़ा रहे थे। अभी क्या मैं पढ़ा रहा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब पढ़ाएंगे, अभी बाबू इस पर चलो, ये तो हमने कुछ डिटेल एक्स्ट्रा दे दिया, बात समझ रहे हो कि नहीं? चूंकि नोट्स हमने भेज ही दिया है, अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस पर काम करेंगे, समझ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में यही चलेगा। गॉट इट वेल और नॉट? सर यस सर। ओके, ये मत समझना कि हम ये उसको छोड़ करके ये चल दिए हैं, ये आपको हमने एक्स्ट्रा दिया है। इट्स ओके।
और Yes. इसलिए हमने पहले ही आपको नोट्स दे दिया ताकि आपको ये ना लगे कि हमें नोट्स से कुछ ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि फॉलो करना है नोट्स को, क्योंकि नोट्स में हमने उतना ही दिया है जितना आपके सिलेबस में। ओके, और अब जो मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा उसमें लेंस पढ़ाऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाऊंगा, वो आपके एग्जैक्टली सिलेबस के हिसाब से चलेगा। इट्स ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू कंबाइन cyan and magenta together, then you get blue, and when you combine cyan and yellow together, what you get? Green, and when you combine yellow and magenta, then you get red. Similarly, now you see here, when you combine red and green together, what color do you get? Yes, red plus green equal to what? Black. And then, and yes, you see here, and then again black. So now question is that what combination of light source makes the color pink? You have to think over कि किस किस कलर को मिक्सअप करेंगे तो हमें पिंक कलर मिलेगा। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। देखिए, रेड को 1% और 100% इसको कह सकते हो, ग्रीन को 40% और ब्लू को 70% में मिक्सअप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पिंक कलर मिलेगा। इट मीन्स दैट पिंक कलर कंसिस्ट ऑफ ऑल द थ्री कलर्स, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लेकिन उसका प्रोपोर्शन अलग अलग है। उसी तरह से व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट सोर्सेस मेक्स द कलर ब्राउन? ब्राउन कलर कब बनेगा? देखिए इसमें, देखिए ब्राउन इज ट्रिकी, ब्राउन इज डार्क ऑरेंज लाइक ग्रे इज डार्क व्हाइट, एंड ऑरेंज इज a रेड प्लस अ बिट ऑफ ग्रीन एंड ऑलमोस्ट नो ब्लू। ऑरेंज में रेड होगा और ग्रीन होगा थोड़ा सा, तो वो ऑरेंज बन जाएगा, लेकिन इसमें ब्लू एब्सेंट रहेगा। मेकिंग ऑरेंज लुक डार्क डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। डार्क ऑरेंज ओनली लुक्स डार्क विद द ब्राइट बैकग्राउंड। और ये सभी कलर इंजीनियरिंग में जाकर के ये सब देख सकते हो। इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, ट्राई दिस। मेक योर सराउंडिंग्स completely dark and click on brown color to darken the background color of the page. So these are the things. So a green filter removes all red and blue light to leave just green light. How else could you filter turns white light into green light? These are the questions you can see. Green light can be produced by filtering cyan and yellow light. Similarly, what types of light makes the color black? You see that absence of all colors or light makes black. That's why black hole appears black. I think that for today it's over, because after 5 minutes it will automatically, meeting will be ended. Let me sort out the problem that we are having on the Google meetings, and after that I would like to continue the meetings class on Google meetings from the next day, and I will share the link for the same. Okay, so thank you for the today's class you have attended, and now next day